Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the 40-day English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है. ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 29. The topic is talking about communication skill. जो मुरासला का मलका होता है, जो सलाहियत होती है जिसमें इंसान एक दूसरे से बात करने की मुख्तलिफ़ तकनीकें जानता है, उसी के ताल्लुक़ से हम आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं: पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें दिए गए मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना होती है. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था. अगर वो वीडियो आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाकर के ज़रूर देख लें. सो लेट्स स्टार्ट. वोकैबुलरी प्रैक्टिस. कुछ अल्फाज है उसी मौजू के तहत, उसी उन्वान के तहत बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज है. इनको ज़रा दिमाग में बिठाइए, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इनको यूज़ कीजिए. मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए, मश्क कीजिए. क्लियरिटी, क्लियरिटी, वज़ाहत. एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, इजहार. आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, वाज़े अंदाज में बोलना. टोन, आवाज़ का अंदाज, लहजा. जेस्चर, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, जो इशारे होते हैं. जब हम किसी से गुफ्तगू कर रहे हो तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो हम इशारे करते हैं, कभी आँखों से, कभी सर से, कभी हाथों से, उसी को जेस्चर बोलेंगे. इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, बाहमी गुफ्तगू. मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी. परसुएशन, परसुएशन, कायल करने की सलाहियत. कॉन्फिडेंस ड्रिवन, कॉन्फिडेंस ड्रिवन, एतमाद से जुड़ी हुई. लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, सुनने की महारत. मैसेज डिलीवरी, मैसेज डिलीवरी, पैगाम पहुंचाने का अंदाज. रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, जवाब. तो ये 12 अल्फाज है, बहुत ही अच्छे अच्छे अल्फाज है. इनको ज़हन में बिठाइए, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए. लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले हैं, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए और दिमाग में बिठाइए. इनको रोज़मर्रा की गुफ्तगू में यूज़ करने की कोशिश कीजिए. क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स. साफ और वाज़ेह गुफ्तगू गलत फहमी से बचाती है. आई ट्राई टू एक्सप्रेस माई थाट्स इन अ सिंपल वे. I try to express my thoughts in a simple way. मैं अपनी बात सादा अंदाज में जाहिर करने की कोशिश करता हूँ. Good speakers know how to articulate their ideas. Good speakers know how to articulate their ideas. अच्छे बोलने वाले अपने ख्यालात वाज़ेह अंदाज में पेश करते हैं. Tone plays an important role in communication. Tone plays an important role in communication. बातचीत में आवाज़ के लहजे का बड़ा किरदार होता है. Body gestures support spoken words. Body gestures support spoken words. जिस्मानी इशारे बोले गए अल्फाज को मजबूत बनाते हैं. Healthy interaction builds strong relationships. Healthy interaction builds strong relationships. सेहतमंद गुफ्तगू मजबूत ताल्लुकात बनाती है. लिसनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज टॉकिंग. लिसनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज टॉकिंग. सुनना बोलना जितने ही अहम है. सुनना बोलने जितना ही अहम है. कॉन्फिडेंस ड्रिवन स्पीच साउंड्स मोर कन्विंसिंग. कॉन्फिडेंस ड्रिवन स्पीच साउंड्स मोर कन्विंसिंग. एतमाद के साथ की गई गुफ्तगू ज़्यादा मुअस्सिर लगती है. आई चूज़ माई वर्ड्स केयरफुली वाइल स्पीकिंग. I choose my words carefully
while speaking میں بات کرتے وقت اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر چنتا ہوں. Effective communication improves teamwork. Effective communication improves teamwork. اچھی کمیونیکیشن ٹیم ورک کو بہتر بناتی ہے. I try to respond calmly in difficult conversations. I try to respond calmly in difficult conversations. مشکل گفتگو میں پرسکون جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. Strong communication skills make life easier. Strong communication skills make life easier. مضبوط کمیونیکیشن اسکلز زندگی کو آسان بنا دیتی ہے. سو ان سینٹینسز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک. عنوان ہے امپورٹینس آف کمیونیکیشن اسکلز. ایک پیراگراف ہے اسی عنوان کے تحت, بہت ہی اچھا پیراگراف ہے. میں اس کی ریڈنگ بھی کروں گا, اس کا ٹرانسلیشن بھی کروں گا, اور آپ کوشش کیجئے اس کے اکثر حصے کو دماغ میں بٹھانے کی. Communication skills play a vital role in our personal and professional life. Being able to express my ideas clearly helps others understand our message without confusion. Good communication is not only about speaking well, but also about listening with attention and responding thoughtfully. The way we use our tone, words, and gestures can change the impact of our message. Effective communication builds trust, reduces misunderstandings, and strengthens relationships in the workplace. Strong communication improves teamwork and productivity. In daily life, it helps us share feelings, solve problems, and connect with people easily. Confidence-driven communication makes a person appear calm and reliable. I believe communication skills can be improved with regular practice and awareness. When we communicate better, we live better. اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں ایک مرتبہ. کمیونیکیشن اسکلز ہمارے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. Being able to express ideas clearly, اپنے خیالات کو صاف انداز میں بیان کرنا دوسروں کے لیے پیغام سمجھنا آسان بنا دیتا ہے. Good communication is not only about speaking well. اچھی گفتگو صرف اچھا بولنے کا نام نہیں, بلکہ توجہ سے سننے اور سمجھداری سے جواب دینے کا فن بھی ہے. The way we use our tone, words and gestures, ہم جس لہجے, الفاظ اور اشاروں کا استعمال کرتے ہیں وہ ہماری بات کے اثر کو بدل دیتے ہیں. Effective communication builds trust, reduces misunderstanding. مؤثر کمیونیکیشن اعتماد پیدا کرتی ہے, غلط فہمی کم کرتی ہے اور تعلقات مضبوط بناتی ہے. In a workplace, strong communication improves. کام کی جگہ پر اچھی گفتگو ٹیم ورک اور پیداواریت کو بڑھاتی ہے. In daily life, it helps us share feelings. روزمرہ زندگی میں یہ ہمیں جذبات ظاہر کرنے, مسائل حل کرنے اور لوگوں سے جڑنے میں مدد دیتی ہے. Confidence driven communication makes. اعتماد کے ساتھ کی گئی گفتگو انسان کو پرسکون اور قابل بھروسہ بناتی ہے. I believe, میرا ماننا ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز مسلسل مشق اور شعور سے بہتر بنائی جا سکتی ہے. When we communicate better, جب ہم بہتر گفتگو کرتے ہیں تو ہم بہتر زندگی گزارتے ہیں. تو یہ پیراگراف ہے, اور بھی اپنے سیکشنز دیکھیں 1, 2, 3. ان تمام کی روشنی میں you have challenge time. Now it's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic importance of communication skills in front of the mirror if you have. تو اسی عنوان پر, اسی موضوع پر آپ کو گفتگو کرنا ہے. چاہے تو 2 منٹ کیجئے, چاہے تو 3 منٹ, چاہے تو 5, بٹ آپ گفتگو کیجئے اور آپ اسی عنوان پر گفتگو کر کے اپنے کمیونیکیشن اسکلز کو
बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। Excellent. You have completed day 29 of your 40-day English speaking challenge. आपने 29वां दिन भी मुकम्मल कर दिया। Keep speaking, keep practicing. बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। और हमारी सीरीज़ बस ख़त्म होने वाली है, 11 सबक बाकी है। So we will practice continuously all the lessons. इंशाल्लाह हम मुकम्मल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर अगर आपने वीडियो पहली मर्तबा देखा है, पिछले असबाक नहीं देखे, तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। पिछले असबाक की वीडियोस भी मौजूद हैं, एक एक करके तमाम असबाक देख सकते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।